Hello, uh, we from Data Acharya is here with a new series where we will help you with machine learning practice, and we will solve the graded assignments, practice assignments of machine learning practice, and also a brief to what we should know before starting the assignment. I will let you guide. Stay tuned. Just starting from the just starting itself from the brief what you knew before solving this assignment. Yes, you should use GPT and all. I have used GPT because there are two things. First, to use the resources, and second, to exploit the resources. So use GPT as a boon. And now I will start with what you need to solve week one assignments and all. This is study material of which I have very few 10-page material. Basically, I will attach the link of this material on the YouTube and all, which I have created through GPT, but it needs prompting and all to create a such brief material just for the resources. This is my week one practice assignment, which we will be solving together first. And this is week one graded assignment one, which we will solve together. And this is week one graded assignment two, which will solve together. I think we have target of 1 hour 30 minutes. So timing is 10:50 and we will stop at 11:20. Sorry, 12:20. Sorry, 12:20. Let's start. We have gone through those who are studying machining practice in diploma. It is sure they have studied Python in foundation. So I need not to explain what is import pandas as PD and import numpy as NP. Panda is a library used for data manipulation, and numpy is also called a numerical Python and all, and used for numerical operations. Right? Let's You're free to ask doubt, and it will be better if you ask doubt so that I can also understand that where you're getting problem, and I will emphasize more on that portion from next. This is the function from which you can read the CSV. df is equal to pd.read CSV. And yes, right. pd.read CSV. Understanding the shape, it is df.shape. df.head is used to get a snapshot of the data set. Usually, if you write df.head, it shows the 5 rows. And info displays the number of columns, data type, and the missing values. df.info. df is a frame, and data is stored inside a data frame. pd.read CSV, and df represents the data set here. What is df.info? df.info displays the number of column, data type, and the missing values. And according to the assignment, our data set has question mark. So we have to replace it with NA so that other pandas function is more familiar with not available than a question mark. So we have it will be used df.replace to replace any value, any particular value from data set. We can use the function replace. We can count the missing value by as follows. df.isNA.sum. Basically, it will return the missing value in every column, right? df.isNA.sum.sum will give the sum, like here 1253 plus 1823. Sum is basically it is summing all the value. Accessing a data using iloc.
ilog is used when we have an integer location of any point or any point in data set, basically 692 row and 0 column. It will it, it will help in accessing the value of data set of which we have the coordinates. Basically in maths, we know the coordinate, it's row and column here. Integer location. Basically, it's called integer location. DF locality is unique. Basically, unique is used to express the unique values in the column. Locality is the column, and in that, what are the unique value? Basically, we have gone through that. It will help us to find that which column in the data frame, such as here we institute, which column in the data frame has how many null values. df.isNA.sum, and column with maximum missing values is understood by df.isNA.sum.idxmax. Basically, df.isNA.sum.idxmax used to give the index, the feature name which has the maximum null value. You know about this. It gives a table in which each we will show the column will have the name of the features and column 2 will have the number of null values each feature have. It gives the name of that index IDX which have the maximum null value, dropping the missing value. Basically, we will see something like in our data, dropping the row having more than 2 missing value. We can go with that. df.isNA.sum we know. Basically, axis 1 is for the rows. Axis 0 is for the columns. So when you sum in a row, you need to write axis 1 because generally it takes axis 0 as a default scheme. So this is a function to get the df which satisfies this condition, right? df.isNA.sum gives x is equal to 1, which will give that each row has how many null values. If x is equal to 0, it will show us that each column has how many null values, right? So is less than 2 will give all the rows, all the df satisfying this condition will be stored in this df, and df.drop NA will drop all the values having NA. Basically, in drop NA, we need not to write axis 1 or axis 0 because it is already predetermined in drop NA that the axis we have to drop the rows. It is already axis equal to 1, which is assume not, which is defined. But for sum, we generally use to sum the column. So we have to define here axis is equal to 1 for if you want to sum the row. Basically, this dfi location, this is the escape function we read in Python. First is for the start, second is for the end, and third is for the skip.
basically 0, 2, 4. It will start, it is nothing is written, means it will start from 0. And if nothing is written in second end, means it will go till last, and the step count at each interval will be 2. This is start is 1, end is till the row ends, and 2 is the step count. Basically, in this manner, we can get the step count for, we can access all the rows with even index and all the rows with odd index. Selecting a column, basically it is type of X and Y. X is the rows and Y is the column. Same thing, step, start, end, and step. This is the function to filter the data. We read about AND in the Python course during foundation in IIT Madras. This is used for all. A data set, a DF satisfying this condition will be stored in this DF outside. Is in the function will basically have the value north or east. And I think this would be more familiar to you. So I'm moving ahead. PD.DataTime. Basically, it converts the date format to the date time in which it is easier to access the month, is easier to access the year, and easier to access the day. From, if we convert this date, basically 12/01/1996, if we convert that format to date time, which is a library of pandas, which is a function of pandas, which will help us to easier access of the month from that whole word, like 12/01/1996. We can find the average of any column feature using this mean function. Dot value count counts the frequency. Basically, it counts that which month has how many count. And dot value count dot idx max, we have gone through idx max also. It will give the index, basically the month having the maximum value count. The group by function is used if you have a data set, and if we want to group our data set on the basis of a column, we use the group by function. And if you want to group by a column on the basis of another column, we use this function df.group by column on the basis of another function dot mean. You will understand ahead. df.group by locality sales price dot mean. Basically, this statement shows that for each locality, what is the average sales price? We have first divide our data set on the basis of locality, grouped our data set on the basis of locality for the sales price. You will understand earlier after we go through the assignments and all. You will go through these functions, and I will let you know. I will give you the data set, and you will see that what this function is creating and all. It will be more clear then. But understand what is the meaning. You are dividing your data set basis that each locality, what is the average price in each locality, average sales price. We are grouping the data frame on the basis of locality for sales price
and we are calculating the mean. Is the most frequent value dot mode. Currently new columns. Basically, if you want to create a new column from the existing column, we can use this. If you want to create a new column is weekend from the weekday, which contains the letter like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, we can use this lambda function. In lambda function, the function which help us to write function in one line. Basically, I can lambda function which need to be devised. This is the norm that if you don't know anything, you need to Google, and is the first basic norm in the industry. You know, basically it is the function double definition double x is written x into 2. We can write similarly double is equal to lambda x and x equal to x into 2 in one line. A lambda function can take any number of argument but can only have one single expression. The result of this expression is automatically returned without return statement. Basically, argument and expression. Lambda is the and x is the argument and x into 2 is the expression. Right? Same here. X is the argument and this is the equation. One, if x in Saturday and Sunday, else 0. Apply function used to apply a function on every row. Basically, inside the apply function, we can write those functions which can help to do operation on a column on every row, basically for a column. Basically, we know this function replace where we can replace any value in the additional info column from this to this. It help to explain the counting, help in explaining the counting rows. These are the important, it help to know that how many rows we have. This is a or. And if we do df.sip.1, it will give the number of columns. And if we do df.save.1, it will give the number of rows. This is the important pandas function we have discussed above. Basically, read CSV, head, info, save, unique values, frequency count, mean, average, model, most frequent value, group by, group data, replace values, drop any, remove missing values, is any, find missing values, ilog, index based selection, apply function. If you want to apply anything on a column, we use we have to create a column from another column, or either we have to apply something on the same column. We use this function. We make a function inside apply, which converts, which manipulates, which add a column on the basis, which helps to add a column on the basis of the existing column and all. Common interview question: difference between lock and ilog. Lock is a label based indexing. Ilog is an integer position based indexing. Difference between unique and value counts: unique returns the distinct value and value count returns the distinct value with their frequency, right? Drop NA and fill NA. Drop NA removes the raw column with missing value. Fill NA replaces the missing value with a specified value. Mean, arithmetic mean, median, middle value after sorting. Mod, most frequently occurring value. PD.read, we will do quick
2-minute revision. pd.ad.csv is equal to load dataset. df.shape is equal to dataset dimension. df.head is equal to first 5 rows. df.info is equal to 1 minute. I need to set a timer. First 5 rows, df.info is equal to data type and missing values. df.in is na.sum is equal to missing value per column. Basically, is na helps us to find that missing values, and dot sum is helping to is na basically it is function which returns 0 or 1 for the missing value, and dot sum helps to accumulate that 0 and 1 and helps to calculate the missing value per column. Here we already the axis is 0. You know, if you want to define, we want to find the number of a number of not available in the row, we have to write here axis here x is equal to 1. Here we have to write x is equal to 1, right? Drop na removes the row with missing value, and it has already, when the panda would have been writing this drop na function, they have already well substituted x is equal to 1, so that if we don't write, it is assumed 1. I lock with the function unique distinct value, group by group, aggregate group and aggregate data, mean, average, mode, most common value, value counts, apply plus lambda function, apply custom transformation, convert strings, and this material covers all the cool pandas step demonstrated in assignment and suitable for 15 to 20-minute teaching session. Basically, this is the week 1 assignment, practice assignment. I have converted your week 1 practice assignment in a color file, and I will say you, first of all, the most important thing when you're solving any question is to understand what you're solving, not to blindly do anything, because it's the time of AI. While being working with some companies and all, I found that you have AI to use, but don't stop using your brain, because the brain is the thing which have created the AI. So not stop thinking, think as much as you can, do deep thinking and all. Use AI as a tool to enhance your thinking, not a tool on which you're dependent, right? So do everything with well understanding. Don't do blind things. Don't do vibe codings. Understand you can use AI to write the code, but understand what you're writing. Then only it will create value, right? So you can see I have pd.read.csv. I have basically, now I have edited this collab file in playground mode, so that I can only, I do not have much time to write everything, but the important part I will write in front of you. This import pandas and np and pd you have already gone through in the pandas course and numpy course in Python. df.pd.read.csv is used to, first you have to upload the data, such as we can see. I am deleting it first. How you should upload the data? You can upload the data from here, and we need processing.csv. This is one here. Now we are uploading the data. We are checking the size. We are displaying the df.head. And this is the function which is used when there is warning, but it is a custom function, the custom thing which everyone's right. And in industry standard, it is important to comment out what you're doing. Now, earlier it would have been problem that every person used to write the commenting part with you, but now you can use AI to write the
so that any other people in any future time reading this code base understand that what they are been going through. So this is an industry standard that you should comment out the function, you should comment out the whole file, you should give a documentation, means comment out means you should give a documentation the whole file, you should give documentation to the function. Basically, now my point was that to understand the data, because in future you would be becoming a data scientist, a data analyst. It is very important to understand the data. If you do blind coding, it will not help. But if you use your mind and then after you use AI, it will create an impactful value, understanding the what you're doing, why you're doing, and where, yes, right, what you're doing and why you're doing. These are two important questions. Basically, this is an airline data. You can see the first column is airline, which have multiple airlines. These are the sources, destination, and the route, and the department time, departure time, arrival time, duration, total stops, additional info, price, month, weekdays, and day. Now the first question is, what is the average flight? What is the average flight ticket price? Write your answer to two correct decimal places. This point 2f helps to write this average price in two decimal places. I think you have been through this because I assume that you have gone through the Python fundamental course. One more important thing, do not fear. If you find anything which you don't know, just Google it, just GPT it, and it is the best way to learn. Learn by doing things. This is now the industry requirement, what I feel so. Price is not the feature. Basically, P should be the capital. This is the average flight we have gone through. If we want to take mean of any fee column, we use this. This is a data frame. We selected price from that data frame and we took the mean. Duration with month. Second question is month with highest number of flight, right? Month with the highest number of flight. You should think the question, how we can find the month with highest number of flight. Go, you have the month feature. Basically, it is a group by function. You have month. You should group by the month. And either you should group by the months, or you can count the that how many times the unique value are occurring, right? You can find that how many times the unique value are occurring. So what you should do is df. Basically, I can go and write the code directly, but I'm thinking that if I don't know anything, how should I think? How should I implement? Earlier, I thought that I will do this with just what are the question? Number of highest number 5. I will use with group by, but after seeing the data, my mind changed. I think this is the easiest way to this question. Basically, using value count. You know, we were going to value count, and the value count helps. There was a question that value count return the distinct value with their frequencies, and we want that only. For each month, we want
The 6 is the months are the distinct value, that each this distinct value has occurred how many times. First, sorry, this is the function. This is the function. Huh. And for getting the maximum from the value count, we use IDX max. Sorry. The month with the highest number, basically, if you do value counts, the data set become okay. I can show something. Wait. This is the value count. 5, 6, 3, 4 are the unique values, and we are this value count help us to accumulate the unique values, returns the distinct value with their frequency. This is value.count, right? Now we have to write this is, you can understand what does IDX max does. It returns the index with this month with the maximum value. This value count, what does this value count does? This value count does from the month function. From the, you can also do something. You should play with the data. It is not how one time it will only then one data set here, no problem. You see df has value 666. That value count gives the returns the distinct values with their frequency. 5634 is the distinct value, and the frequency is 3092 and all. Average price per weekend per in weekdays. This basically this is this part. Apply plus lambda function. Basically, we are using the existing function to create another function is weekend using the lambda function under the apply, right? So what will you do? df dot, what is the time? Weekend, weekdays. Days. Apply lambda x. If x is if the x is in average price on weekdays and it's a flight ticket price, right? So first we need to identify what is the week, is it weekend or not, right? So we can do like this. All right, is weekend x
lambda okay. One if x in Saturday if x in Saturday and Sunday, else 0. This is the convention. If x in Saturday 1, if x in Saturday and Sunday, else 0. If you're not able, if you're getting problem in understanding the lambda function, the best thing you can go is go through W3 schools. W3 schools, lambda functions, Python lambda functions. Basically, we exercise lambda argument and expression. Basically, it is lambda e, and we want to convert e plus 10, then x is equal to lambda e plus 10. X is a function over 5, and it will give 15. And all this, okay, you understood? More complex. This is not more complex. This is not more complex. Lambda built-in functions. Basically, is this. X, no, it's not. This is more filter. I want to if else is broken. I want lambda with if else, so that you can understand what we are doing. Lambda function with if else. Basically, if lambda x is the argument, is a ternary operator. Lambda value if true, if condition else, if true. Basically, this is the you should remember. Value if true. Value if true is you can use this so that you can get no problem while understanding this. They're very basic. A very good thing, not basic. This argument value if true, basically value if true, 1 if the condition, else the value if false, 0, right? This is the structure how you can write if else statement using lambda function. Now average price by data type. For day type, basically we need to find is the average price of flight ticket price higher on the weekdays or Sunday. Now you can do one thing. We can comment out, okay, or we can do one more thing. Great. Wait a minute. I just wanted to show that what is happening in the data set while we're doing this, while we're writing this. Okay. What is the change? We are getting one more column is weekend, right? We are adding one more column, and this is the way to add one more column to a data frame. And if you want to know what is data frame, you should write what is data frame. Data frame in a Python. This is the way you should start. Data frame is a two-dimensional table-like data structure in Python that organizes data into row and columns, much like Excel, suite or SQL. Now, average price by data. We want to find the average price. We want to group this whole data according to the, is it weekend? Is it 0 or 1? And also find that what is the average price of the weekend or
weekdays. So basically we can do as df group by function. We can go through what is group by function. You can understand. Basically you need to go again and again to the part which you are not understanding, and I'm doing this for you. The column, another column. Basically this is the column and this is the column. Basically we want to group the group is weekend on the basis of sales price, on the basis of the sales price, right? So df dot group by is weekend price. On the basis of price, basically I'm in the place where there's too much hot, so sorry for that. And we need to, I want to show this function. Basically let me show. Basically I want to not only give you the answer, I want to understand that what you're doing and why you're doing. Basically this gives the price. Right. And so yes. By giving basically this function is not working in head because the group by function is grouping and aggregating. We are grouping and it need to be aggregated. So we need to aggregate is weekend on the basis of price. So until and unless do dot mean it will not give us what we need. The average price. Zero has this value, zero has this value, right? This is simply a function in which we use indigo and all that we have to to increase in addition no info to no info and replace all occurrence of no info with no info. And no info and no info. How many flights are fall under the airline indigo and have no info? We will do this.
It is under this function additional info dot for me. What do we say? Replace, right? No info with no info. I think it will be replace no info with what you want. You can go with the function that replace by group by value count, mean, average, filtering, even column, odd rows. Apply functions, lambda, counting rows. You can find. You can do. This is the way if you get a problem. I know what I'm thinking that way when I'm solving as a noob, how I will solve this question. We have dot replace. How we will replace a function. Go with that, search. To replace value, right? In place means basically you want to create similar yes, replace multiple values, right? You can do that, right? You can find this thing. It will always help you to go through that. But you need to comment no info, right? Now everything is well. Now we need to the thing which I need to let you understand. Data handling, value count, group by, move, creating new columns. We have created new columns, we have applied functions, we have replacing values, right? Mean average, we have done data handling, filtering data, all rows. Basically, we need to understand, we need to find the two entries, additional info and no info, that how we can replace a no info, basically how we can replace in each column. We use this replace function, and we have to replace all occurrences of no info with no small info, and how many flight falls under this line. So we can this is the airline in blue, right? Airline. Please whoever joined can let me know any doubt.
so that I can also understand your perspective. And anything which you are not able to understand, if you're in the meet. Deepak. Basically we want that कि हमारा एयरलाइन इंडिगो हो, our airline should be Indigo, and the info part, the additional info part, the additional info part the additional info part should be no info. Oh, sorry, we need to do this. We need to put it in a bracket. Right now, this will work. I'll be wrong that data frame df is not callable. Why it is not callable? Okay, I think I screwed up there. Oh, the problem is that I did the same thing here and all. We need to do a separate function because Python ये execute होगा तभी ये execute होगा because I have done this part and all, right? कुछ करना है no, हाँ ये शायद सही। बेसिकली क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड कि मैंने, इट इज वेरी थिंग यू शुड फोकस ऑन कि ये पूरा पाइथन एक बार में पूरा लाइन इंटरप्रेट करता है और ये मतलब एक साथ सब कुछ करता है। तो इफ मैंने पहले एक ही कोड में इसको और इसको रखा तो पहले इसने क्या किया, इसको रन किया लेकिन बट ये चेंज सेव नहीं हुआ फाइल में डीएफ एडिशनल इन्फो में, और फिर इसके बाद यहाँ गया और उसने उसी डेटा सेट को चेक किया तो ये नो इन्फो वाला पार्ट था नहीं इसमें, सो इट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। सो अगर मुझे दो कोड जो कन्फ्लिक्टिंग हो, मतलब अगर मुझे ऐसा कोड चाहिए, इफ यू वांट दैट सेकेंड कोड शुड हैव समथिंग which should be implemented earlier, so मुझे वो चीजों को अलग कर देना चाहिए। एंड व्हाट वी डिड, मैंने एक नया डेटा फ्रेम बनाया इंडिगो नॉन फ्लाइट्स, और ताकि उसमें जिसमें एयरलाइन इंडिगो हो और एडिशनल इन्फो में नो इन्फो हो। वी कैन सी द डेटा सेट ऑल्सो ऐसे करके, लेट मी see what is the data set, and save zero is a function
to find the shape of data frame. Wait. It's number of flight, right? 1650. Now question 5 is to convert the value of duration into seconds and enter the answer correctly. मैंने ये I showed you earlier that apply function में क्या करना पड़ता है. What we have to do on apply function. The apply function is used to create another column or used to apply a function on every row. Basically, if you want to create another column or do operation on a column using some function, this apply is used. And what our current question is that we have to convert the value of duration into seconds. So first we have to convert the value of duration into seconds, and after onwards we can use that convert function to convert the duration and all. फर्स्ट हमको ये देखना चाहिए कि कोई भी इट्स नॉर्म कि कोई भी फंक्शन जो है या जो भी है हमारा पीडी व्हाट आई टू एक ये चीज मेरा मिस हो गया दैट कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएफ एंड पीडी. डीएफ इज डेटा फ्रेम एंड पीडी इज pandas, right? If first I want to check that agar if pd is have null value, if pd have is na, स्ट्रिंग हो जाएगा ये तो. ड्यूरेशन स्ट्रिंग मतलब बेसिकली ड्यूरेशन स्ट्रिंग कैसा वैल्यूज है तुम आप चेक कर लो एक बार. ड्यूरेशन स्ट्रिंग इज वैल्यू लाइक दिस. मुझे क्या करना है, मुझे ड्यूरेशन जो 26 आवर 35 मिनट है, व्हाट वी हैव टू डू, मुझे सबको सेकंड्स में बदलना है. तो एक आवर में 60 बेसिकली ऐसे लिख सकता हूँ, एक आवर में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकंड होता है, राइट? दिस इज फॉर कन्वर्टिंग आवर इंटू सेकंड्स. तो जो 26 है, जो हर आवर को मुझे अगर सेकंड्स बदलना होगा तो 26 इंटू 60 इंटू 60 3600 करना पड़ेगा. 26 इंटू 3600 करना पड़ेगा. और मिनट के लिए हम लोग को बस 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ चैलेंजेस ये हैं, द चैलेंजेस आर दिस दैट वी हैव टू, दिस इज स्ट्रिंग और मुझे ये 26 आवर 35 मिनट में 26 निकालना है, 35 निकालना है. वी हैव टू टेक इट 26 आउट 35 आउट and here we use the string function to come out. This function is written as well, but कई सारे वैल्यू null है, तो इसीलिए what we are doing is if it is null return np.nan not available. Right. Now मैं strings का function लिख रहा हूं, parts string है, डॉट स्प्लिट फंक्शन जो है वो क्या करता है,
वो जब भी इसके अंदर जो लिखा होगा एनीथिंग विच इज रिटन एट दिस, उस फॉर्म में, मतलब अगर कहीं भी सेंटेंस में ये चीजें होंगे तो उसको स्प्लिट कर देगा। तो यू कैन फाइंड हाउ डिड आई थॉट दिस, कि हर 26 आवर 35 के बीच में ये स्प्लिट करता है, मतलब 26 आवर को अलग कर देगा और 35 मिनट को अलग कर देगा। एंड वी वांट दैट ओनली, और ये हर जगह हो रहा है, 1 आवर 30 मिनट के बीच में ये स्प्लिट है। तो ये स्प्लिट फंक्शंस क्या करता है, एक स्ट्रिंग को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बीच में स्प्लिट कर देता है। और we can use this also, हमेशा हमें we should google it that what is split, जैसे df dot split। सॉरी, इट इज स्लैश लिखा गया। वो df dot split क्या करता है, हाँ, return one column, हाँ, ये string dot split होगा, sorry। हाँ, ये होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर कि कैसे लिखा जाता है स्प्लिट फंक्शन। तो हमको यहाँ ये बेसिकली मैं जो करता जा रहा हूँ, मैं कमेंट आउट भी कर रहा हूँ कि सो दैट इट कैन बी यूज्ड फर्दर। जो सेपरेटर है हमारा, ये स्पेस है, इससे हमें पार्ट्स में मिलेंगे दो चीज। पहला 26 आवर, दूसरा 35 मिनट। तो हम लोग को ये करना पड़ेगा फॉर पार्ट, लूप चला के दोनों को फिर अलग करने का, फॉर पार्ट इन पार्ट्स, इफ इफ आवर इन पार्ट, वी विल डू दिस। इफ आवर इन पार्ट, और एक और चीज, मैं टोटल सेकंड्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, टोटल सेकंड को 0 लिखूंगा पहले, टोटल सेकंड्स। मुझे ये पता है ऐसे लिखा जाता है, ये कैसे लिखा जाता है, ये इस, या तो तुम ये लिखो प्लस इक्वल टू ये, या तो ये लिखो टू राइट लेस, टू यूज मेमोरी लेस, we write this। Total, please guys, I am also a final year student in a college, so if you get problem, ask me a dot, it will be more easier for me to reply back. If is there any problem you are not able to speak, you can write in chat and all। Total second plus equal to what we can do, वी हैव, अब मैंने क्या किया, व्हाट वी डिड, कि 26 आवर 35 मिनट को मैंने 26 आवर और 35 मिनट में अलग अलग बांट दिया यूजिंग दिस स्प्लिट फंक्शन। नाउ अब 26 आवर का प्रॉब्लम है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज रिप्लेस। मेरे पास 26 आवर है, मुझे एच को खाली स्पेस, मतलब विथ नॉन स्प्लिट में रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि मुझे 26 मिल जाए, और उसको मैं स्ट्रिंग को मैं आराम से इंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बेसिकली व्हाट आई कैन शो, जैसे मेरे पास, दिखाता हूँ क्या लिख रहा हूँ, मेरे पास 26 आवर है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, रिप्लेस फंक्शन यूज करके इस एच को एम्प्टी स्पेस से रिप्लेस कर दूंगा, बचेगा 26। और ये एक 26 स्ट्रिंग है, और वी नो वी कैन इजिली कन्वर्ट इनटू इंट बाय डूइंग यूजिंग फंक्शन इंट, अप्लाइंग इंट, राइट। Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टूड दिस पार्ट, समझ में आया? Yes, sir. Int of x into 60 कर सकते। हाँ, कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज है कि बेसिकली हम लोग ऐसे सोचना पड़ेगा कि हम लोग को जब अगर ड्यूरेशन स्ट्रिंग को वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, बेसिकली आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज आपको इंग्लिश, मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिट
at least try to understand English, because if in industry English is important. We can speak in Hindi, हम बोल सकते हैं, but try to understand onwards. That's why I am more focusing that we should speak English and all. Yeah, but because it could be an issue when you will go and join a company. You have to deal with foreign clients, and you have to understand, at least understand English, at least speak English. अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, तो बोलो, आई विल स्पीक, मतलब वो पार्ट में हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा. तो यहाँ पर ये 26 आवर आवर 35 मिनट है. तो मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ये इस फंक्शन से मेरे को क्या हुआ, ये बताता हूँ इस फंक्शन से क्या हुआ मेरे को. इस फंक्शन से व्हाट हैपेंड, ये 26 आवर 35 मिनट जो था, ये पूरा एक स्ट्रिंग था. ये स्प्लिट फंक्शन इस खाली स्पेस के बेसिस पे इस दोनों को स्प्लिट कर दिया, इस पार्ट को और इस पार्ट को. अब मेरे पास ये रहा, ये रहा. ये पार्ट्स इज जस्ट लाइक अ लिस्ट, जिसमें 26 आवर एक होगा और 35 मिनट अलग अलग स्टोर होगा. तो मैंने फॉर लूप चलाया, वी फॉर पार्ट्स इन पार्ट्स. और इफ एच आर इन पार्ट्स, मतलब अगर एच आर किसी स्ट्रिंग में होगा, बेसिकली लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स होगा. इफ एच आर किसी स्ट्रिंग्स में होगा, 26 आवर एच आर है, तो नाउ वी विल गेट दैट वी कैन कन्वर्ट इन दिस वे. देखा तो कैसे कन्वर्ट करता हूं. इंट, पहले अंदर का फंक्शन लिखता हूं. रिप्लेस पार्ट डॉट रिप्लेस एच आर, नो स्पेस. सॉरी, यहाँ डॉट आ गया, गिव द डॉट. इससे क्या हुआ, 26 एच आर में ये एच आर जो है वो रिप्लेस हो गया एम्प्टी स्पेस से, और मैं फिर बचा 26, और मैं उसको इंट में कन्वर्ट करके 60 × 60 कर रहा हूं. राइट. सिमिलरली, इफ मिनट इन पार्ट्स, मिनट ही ना वैसे देखने, तो यहाँ पर इसमें क्या है, हाँ एम है, सॉरी मिनट नहीं है, और यहाँ पर एच आर भी नहीं होगा, यहाँ पर एच होगा, बिकॉज 26H 35M लिखा हुआ है वहां पर. तो बार बार एक ही चीज लिखने की जरूरत नहीं है. वी नीड टू CTR+C CTR+V, और यहाँ पर एच आर की जगह एम, और 60 की जगह 60. राइट. Yes, अंडरस्टूड. ये इसमें कुछ प्रॉब्लम? understood. हाँ, Understood, sir. अंडरस्टूड. राइट. तो ये टोटल सेकेंड्स कैलकुलेट हो गए. और मेरे को ये टोटल सेकेंड्स पता चल गए. अब व्हाट वी हैव टू डू, हमारा था कि कन्वर्ट्स द वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन इनटू सेकेंड्स, वो खत्म हो गया. अब इसको मैं अप्लाई करना, इसको मैं मिटाना, इसको लेट मी इरेज दिस. व्हाट वी हैव टू डू नाउ, कि वी हैव टू, एक ड्यूरेशन कॉलम है, और अप्लाई व्हाट, वेयर वी यूज अप्लाई, जब उस कॉलम पे, व्हेन वी हैव टू डू समथिंग ऑन दैट कॉलम, आइदर मैनिपुलेट दैट कॉलम, या तो मुझे उस कॉलम में चेंजेस करने हैं, या तो वी हैव टू क्रिएट अनदर कॉलम. वी आर क्रिएटिंग अ कॉलम, अनदर कॉलम ड्यूरेशन डॉट सेकेंड यूजिंग ड्यूरेशन. तो मैं उस ड्यूरेशन वाले कॉलम पे, जो यहाँ ड्यूरेशन वाला कॉलम है, उस पे मैं ये फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं. ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हर एक ड्यूरेशन स्ट्रिंग को उठाएगा, जो ड्यूरेशन है, और उस पर रिटर्न क्या करेगा, टोटल सेकेंड्स.
जो ड्यूरेशन डॉट सेकेंड्स में स्टोर होगा, राइट। और उसी ड्यूरेशन डॉट सेकेंड्स का हम लोग मीन ले लेंगे। एक बार दिखाता हूँ व्हाट इज दिस, क्या क्रिएट हुआ। तो इसमें कन्वर्ट हो, कुछ प्रॉब्लम हुआ। क्या है, एरर आता है। हम्म पार्ट डॉट पार्ट डॉट रिप्लेस होता है पार्ट्स में इंटरस्पेस होगा। 1 मिनट में देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। 26 आवर्स। यहाँ गलती ये हुआ कि मैं यहाँ पर आवर एच था, और मैं आवर बेसिकली यहाँ पर जो कॉलम है वहाँ एच है, और मैं एच आर लिख दिया था। दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग फंक्शन तो सही था। ये व्हाट व्हाई दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। नाउ इट विल रन। बेसिकली आई यूज एच आर, लेकिन वहां पर ड्यूरेशंस में एच है, 26 एच है, ना कि एच आर। दैट्स व्हाई क्रिएटेड प्रॉब्लम। और मैं नाउ आई वांट टू सी यू द डेटा सेट, कैसा है डेटा सेट। बेसिकली ऑलवेज आफ्टर अप्लाइंग एनीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग, व्हाट यू हैव डन टिल नाउ। बेसिकली देखो क्या होगा। हम्म, हम्म। ये जो ड्यूरेशन था 26 आवर 35 मिनट था, और ये ड्यूरेशन डॉट सेकेंड्स बना। आप देखो ये बना रहा है कि नहीं। बेसिकली वी एडेड another column duration second on the basis of this duration। और ये 26 आवर 35 मिनट ऐसे बना है, 26 इंटू 3600 प्लस 35 इंटू 16, जो यहाँ मैं कर रहा था, जो मैंने यहाँ किया है। जस्ट कन्वर्टिंग द आवर इनटू सेकेंड्स एंड मिनट इनटू सेकेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट आवर कैटेगरी। बेसिकली क्या कह रहा है, हाउ मेनी फ्लाइट स्टार्टेड मॉर्निंग, अराइव द डेस्टिनेशन एट इवनिंग। मॉर्निंग मतलब 12 बजे से पहले, इवनिंग मतलब 12 बजे के बाद, राइट। तो इस पार्ट में ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि मुझे कभी भी कुछ ऐसा जो जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो मुझे ट्राई और एक्सेप्ट के फॉर्मेट में लिखना चाहिए। यह टाइम स्ट्रिंग है। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वी हैव टू एंड द मीट। दो क्वेश्चन है, दिस मीट विल एंड। यू कैन वॉच दिस फुल सेशन ऑन यूट्यूब, जहां मैंने व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड एक एक फंक्शंस जो भी इस वीक 1 प्रैक्टिस असाइनमेंट में यूज होंगे, आई हैव एक्सप्लेन वेल, एंड आफ्टर दैट आई वेंट अहेड solving this all questions and all. Maybe it will be easier for you to understand what I'm speaking. जल्दी जल्दी मैं ये कर देता हूँ, ट्राई वाले फंक्शन स्प्लिट कर देता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली सेम टू सेम चीज है। ये टाइम स्ट्रिंग पहले देख लो क्या है। बेसिकली एकदम आंख मूंद कर काम नहीं करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू डूइंग, व्हाई यू डूइंग। यहाँ पर ये मुझे टाइम स्ट्रिंग देगा, डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम, ये टाइम स्ट्रिंग है। तो इसमें सेम टू सेम करना है। ये जो चीज है, इसको मुझे एम्प्टी क्या कहते हैं, इसको मुझे हटाना है, और इससे मुझे 20 वापस लाना है। और ये क्या करेगा, जब मैं इसके बेसिस पे स्प्लिट करूंगा, इसके बेसिस पे स्प्लिट करूंगा, तो मुझे ये 20 देगा और 0 0 देगा। मुझे 0 0 से कोई मतलब ही नहीं, मुझे मतलब है 20 से, या 19.35 से। मुझे 35 से कोई मतलब ही नहीं है इवनिंग और मॉर्निंग चेक करने के लिए, मुझे 20 से मतलब है। तो यहाँ पर तीन होता है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। 5 बजे, सुबह 5 बजे से 12 12 बजे मॉर्निंग ले लेते हैं, 12 से 5 आफ्टरनून लेते हैं, और 5 के बाद 5 से 8 तक लोग इवनिंग लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी है डेटा में, मतलब जो भी इनका एक्सपेक्टेशन है, मैं जो मैंने जिस पे आंसर आ रहा है ऐसे कर रहे हैं। तो बेसिकली मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा
जिसमें मुझे आवर कैलकुलेट करना पड़ेगा। आवर कैलकुलेट कैसे होगा, मुझे वैसे ही करना पड़ेगा, पहले स्प्लिट लिखना पड़ेगा, टाइम स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। स्प्लिट का यही है रूल, जब भी कुछ समझ में नहीं आए तो क्या, पहले सेपरेटर लिखना है, और यहाँ पर सेपरेटर, सॉरी, सॉरी सॉरी, हाँ, स्प्लिट लिखना है। बेसिकली स्प्लिट किस बेसिस पे करना है, मुझे स्प्लिट इस बेसिस पे करना है, ये मेरे को दो स्ट्रिंग देगा, और उसका पहला पार्ट, जीरो मतलब पहला पार्ट पे मुझे इंट लगाना है। बेसिकली ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट मुझे एक लिस्ट देगा, जिसमें 20 और 00 होगा, या 19 और 35 होगा, जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो उसका पहला वाला पार्ट 20 उठाना है, वी नीड टू टेक इट दैट, और उसमें इंट लगाना है। और आफ्टर दैट ये हो गया, मुझे आवर मिल गया। हम्म, और क्या होता है, एक्सेप्ट, अगर ये पार्ट आप छोड़ भी सकते हो, बिकॉज इट विल बी कम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग, ट्राई एक्सेप्ट टू। नाउ दिस इज द स्ट्रिंग, और ये फंक्शन करेगा, और मुझे मिल जाएगा 922। बेसिकली मैंने क्या किया, वही सेम चीज, छोटे छोटे पार्ट, मैंने टाइम, वो स्ट्रिंग को आई हैव कन्वर्टेड, दो 20, जो ये पार्ट था 20 और 35, मैंने 20 को अलग किया, 00 को अलग किया, मैंने 20 उठाया, और मैंने देखा कि ये तो कौन से इवनिंग में लाई कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सेम टू सेम व्हाट वी आर डूइंग, सेम अप्लाई फंक्शन लगा रहा है डिपार्चर टाइम पे, क्रिएटिंग न्यू कॉलम एंड ऑल, अराइवल टाइम कैटेगरी, so that we can do this and find that कि जहां ऐसा कौन सा, वी नीड अ डेटा फ्रेम जहां डीप टाइम कैटेगरी मॉर्निंग है और अराइवल टाइम कैटेगरी इवनिंग है, और उसका मैंने सेव चेक कर लिया। सेव मतलब बेसिकली वो जो फिल्टर है, बेसिकली दिस इज अ फिल्टर। फिल्टर मतलब कि जो मुझे चाहिए, मुझे इस बॉक्स के अंदर लिखना है, और वो डेटा फ्रेम से वो फिल्टर कर देगा, राइट। वी हैव लेस टाइम, सो वी आई एम डूइंग सम फास्ट, वी हैव 10 मिनट्स, उसके बाद मैं 2-3 मिनट्स आपके डाउट ले लूंगा, या कुछ सजेशंस एंड ऑल। कंस्ट्रक्टिव सजेशंस के लिए वेलकम, डिस्ट्रक्टिव सजेशंस के लिए यू कैन मेल एंड ऑल एट माय ईमेल आईडी। मोस्ट फ्रीक्वेंट वीकडे इंक्लूडेड एंड ऑल, दिस इज द फंक्शन। ये फंक्शन पहले से रिलेटेड है, मुझे मोस्ट फ्रीक्वेंट निकालना है। तो पहले मेरे को डेटा सेट भी देखना, हर बार ना जब भी कुछ करो तो यू नीड टू देख, सी दैट क्या हुआ है चेंज डेटा सेट में। तो पूरा कॉलम आ गया, नो प्रॉब्लम, 17 कॉलम्स है। तो बेसिकली क्या चेंज हुआ कि मेरे मेरे पास एक हाँ, आफ्टरनून और इवनिंग नाम से, नहीं, हाँ, डिपार्चर टाइम कैटेगरी और अराइवल टाइम कैटेगरी नाम से एक और कॉलम बन गया, और उस पर हम लगा दिए एक फिल्टर, कि जहां डिपार्चर टाइम मॉर्निंग हो और अराइवल टाइम इवनिंग हो, वहीं पर हमको वही डेटा फ्रेम दो, और मैंने उसका सेव चेक कर लिया, राइट। जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन से फ्लाइट मॉर्निंग में आए और इवनिंग में डिपार्ट कर गए, राइट। और फिर मुझे करना है इनकोड द वैल्यू ऑफ कॉलम वीकडेज एज फॉलोज, वीकेंड इक्वल टू 1, ऑल रिमेनिंग वैल्यू 5 डेज एज 0, व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वीकडे। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वीकडे के लिए मुझे ये करना है, मुझे df डॉट इस वीकेंड में मॉड लगाना है उस पे जहां वैल्यू 0, राइट। दिस इज द फंक्शन। आप इसको आपको समझ में नहीं आ रहा तो यू एवरीथिंग यू शुड गूगल एंड ऑल, लेकिन नेवर डू ब्लाइंड कोडिंग, ब्लाइंड कोडिंग इज वेरी बैड। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप गूगल करो, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। देखो, इज वीकेंड, फॉल्स और 0, वीकडेज आर द मोस्ट कॉमन इंटीज इन योर डेज, एंड वीकेंड्स आर द मोस्ट कॉमन इंटीज योर डेट। देखो इसमें क्या होगा, हाँ, ये तो उसको एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज इट्स नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ कंटेक्स्ट।
मैंने क्या किया, मॉड निकाला। देखो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जस्ट हेल्प मी टू अंडरस्टैंड मोर। पड़ेगा कि एक सेकेंड, इंटरनेट कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मीनवाइल एनी डाउट, एनी सजेशंस? No, no, sir. Can you बोलो। can you share the YouTube channel link where this video will be uploaded? हाँ, I will share it. I will share it. I can share I will share it now in your chat. It is data Acharya. Second, let's see the link. Okay, sir. I know that YouTube channel. I will find that video. No, I'm sending it in chat. No problem. No need to say me, sir. It's okay. You can call me Sanchit Bhaiya and all if you're less than my age. No problem. Hmm. Any doubt? Oh, no, yeah, no. बेसिकली मैं मोड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मोड क्या चेक करता है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन से, मतलब इस वीकेंड में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0 है या 1 है, राइट? तो यहाँ पर वीकडेज को हम लोग 0 इनकोड किए हैं। इस वीकेंड मतलब कि इस वीकेंड में व्हाट वी डिड, कि जो भी वीकेंड था उसको मैंने 1 इनकोड किया, और जो वीकेंड नहीं था उसको 0 इनकोड किया। इनकोड मतलब बेसिकली उसके जगह